Hello, friends, to this episode of Movie Cafe. And tonight on Movie Cafe, we are discussing about the most phenomenal hit of the year, that is Jawan, Shah Rukh Khan's Jawan, which released on the 7th of September. And the film has been doing exceptionally well. It has made new records on in the box office, and Shah Rukh Khan fans are just going gaga about him, about the film, about the action, about all the elements that we see in the blockbuster to be blockbuster film, which is made by Atlee, the director from South, the director from the Tamil cinema and film industry. So today we have with us a lot of people who will be talking about Jawan, how they felt, and we will be checking their reactions on the film. We have Garima, we have Shalini, we have Siddharth, and we have Amit on our show today. I'll go one by one to check about their reactions about how they felt after watching Jawan. So first, I'll go to our esteemed lady from Movie Cafe, Garima. So Garima, आपको जवान कैसा लगा? आप हमें पहले बताइए. Hi Jawan, thank you so much for having me here. पहले तो मुझे लगा आप शालिनी से स्टार्ट करने वाले हैं आज, क्योंकि वो हमें मुझे लगता है कि मूवी का ज्ञान उनके पास ज्यादा है, मेरा थोड़ा कम है. बस ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ. तो मैं तो बहुत बड़ी शाहरुख खान फैन हूँ. आई थिंक सबको पता है कि अब तो मैं अपने आप को फैन भी नहीं मानती. आई लव हिम. मैं घर में सबको ऐसे बोलती हूँ कि ओ आई लव शाहरुख. तो मेरे हिसाब से मतलब मेरा जो रिएक्शन था, अच्छा 2-3 सालों से आई थिंक जो लास्ट शाहरुख की मूवी आई थी उसके बाद से ना थोड़ा वो कम हो गया था उनका. मुझे ऐसा लगता था क्रेज, ज्यादा बातें नहीं होती थी, बहुत नेगेटिव बातें होने लग गई थी. तो जब पठान आई थी तो आई वॉज रियली होपिंग एंड मतलब मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी और मैं बहुत होप कर रही थी कि ये मूवी चलनी चाहिए, क्योंकि ऐसे नहीं हो कि ना डाउनफॉल, क्योंकि बहुत बार हमने देखा है कि किसी भी स्टार का जब डाउनफॉल स्टार्ट होता है तो कमबैक बहुत मुश्किल हो जाता है. तो मुझे बहुत ऐसे लगा था कि ऐसे नहीं हो कि ये भी पिट जाए और फिर वापस से, क्योंकि लोग तरह तरह की बातें तो करते ही रहते हैं कि एज हो गई है, अब तो हीरो के रोल नहीं करने चाहिए, अब तो फादर के रोल करने चाहिए एंड ऑल दैट. तो मैं बहुत जब पठान आई, मैं फर्स्ट डे देखने के लिए गई थी, तो मैंने मूवी देख के आई वाज लाइक यार ये ब्लॉकबस्टर होने वाली है, पीपल आर गोना लव दिस. एंड फॉर सम रीजन जब शाहरुख खान का, मैं आज कहीं पढ़ भी रही थी एंड आई कुड रिलेट टू इट, कि जब शाहरुख खान जीत रहे होते हैं ना तो बहुत ऐसे पर्सनल विक्ट्री लगती है कि अरे यार फिर से हो गया. तो सेम विद जवान, जब इसका प्रीव्यू आया था, दैट्स अ फर्स्ट टाइम आई थिंक वी हर्ड प्रीव्यू वर्ड. फिर मैंने आई थिंक जवान के प्रीव्यू देखने के बाद मैंने गूगल किया था कि प्रीव्यू क्या होता है. तो हमने प्रीव्यू देखा तो उन्होंने बहुत ऐसे मिस्ट्री रखी थी, ज्यादा हमें स्टोरी किसी को रिवील नहीं हुई. फिर बहुत लास्ट मिनट पे ट्रेलर आया एंड जब मैंने जवान देखी, ओ आई लव्ड इट. एक ऐसा होता है ना जब शाहरुख की एंट्री होती है, तो किसी भी हीरो की जब एंट्री होती है तो एक बार आप चिल्ला रहे होते हो, दो. इसमें था कि इतनी बार शाहरुख के अलग अलग कैरेक्टर्स की एंट्री हो रही थी ना, तो होल थिएटर वाज शाउटिंग. और मैं जहाँ पे रहती हूँ, मैंने भी पहले भी बोला कि यहाँ पे थोड़ा क्वाइट रहता है, क्योंकि इंडिया में जितना लोग आके नाचने लग जाते हैं हीरो की एंट्री पे, और जितना मजा मतलब इंडिया में आपको हिंदी मूवी देखते हुए आता है, वो हमारे यहाँ पे थोड़ा मिसिंग रहता है. But this time I think everybody was clapping, everybody was cheering, so I loved it. और मैं तो देखिए, मैंने तो शाहरुख की राम जाने जैसी फिल्मों को भी पसंद किया है, तो मैं अगर ये बोलूँ कि मूवी बहुत अच्छी है तो थोड़ा गलत हो जाएगा. बट जवान काफी मतलब मुझे तो पर्सनली अच्छी लगी एंड मुझे बहुत मजा आया. मुझे एक चीज बोलनी है कि दीपिका, मतलब मैं थोड़ा मुझे लगा ये जब ट्रेलर आया था तो दीपिका का एक झलक हमें देखी थी, तो मुझे लगा शायद किसी गाने के लिए दीपिका का कैरेक्टर है, मगर काफी अच्छा उनका रोल था. एंड मुझे दीपिका और शाहरुख की जोड़ी काफी पसंद आती है, तो उस हिसाब से उनका काफी मतलब बहुत जितना मुझे लगता है नयनतारा को रोल दिया गया, सिमिलर टू दीपिका गॉट द रोल एंड शी प्लेड वेरी वेल. एंड एक और है कि जब बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं, जैसे अभी लास्ट जो सलमान खान की मूवी आई थी जिसमें आई डोंट रिमेम्बर द नेम, शहनाज गिल और बहुत सारे लोग थे उसमें, तो बाकी सारे कैरेक्टर्स का ना कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो उनका रोल ही बहुत कम है. पलक तिवारी, शहनाज गिल, बहुत सारे लोगों का तो डेब्यू था वो मूवी, पर इतना मजा नहीं आया. बट सरप्राइजिंगली जवान में जो छोटे छोटे कैरेक्टर्स हैं, जैसे रिद्धि डोगरा ने उनकी माँ का कैरेक्टर प्ले किया है, सानिया मल्होत्रा है, कुछ नए
गर्ल्स है जो मुझे आई डोंट रिमेम्बर द नेम नाउ, बट उनके कैरेक्टर्स भी मुझे काफी पसंद आए, जितना भी उनको स्क्रीन स्पेस था एंड जितना भी वो स्क्रीन पे दिखे, तो आई रियली लव्ड इट। बट मुझे लगता है मैं बार बार शाहरुख शाहरुख बोलती जाऊंगी, बाकी लोगों को चांस नहीं मिलेगा, सो आई पास इट टू यू नाउ। चलिए, बहुत अच्छा लगा गरिमा आपसे शाहरुख के बारे में सुनने के लिए। और हमें पता है कि यू आर अ बिग बिग फैन ऑफ शाहरुख खान, एंड ऑफ कोर्स यू हैव लाइक ऑल द जस्टिफाइड रीजंस टू लव जवान। तो हम आगे बढ़ेंगे अभी शालिनी जी के पास। शालिनी जी, हमें एक चीज बताइए। हम आशा करते हैं कि आपको जवान भी अच्छा लगा है, लेकिन क्या आपको ये भी लगता है कि विथ हिट्स लाइक सुपर हिट्स लाइक पठान एंड जवान, द किंग हैज कम बैक टू टेक हिज पोजीशन बैक? डू यू बिलीव इन दैट स्टेटमेंट, इन दैट आइडियोलॉजी, कि शाहरुख खान का रिसरेक्शन हो गया है 5 साल के बाद, इतना लंबा गैप के बाद जो वो आए, and he is going to continue and rule the Bollywood like he did earlier? आपका क्या ख्याल है? Well, thank you for having me here. Yeah. मेरे ख्याल से I have to wait for Dunki to say this statement अच्छा, कि शाहरुख come back हम्म, कि नहीं, because Jawan was a bit let down for me. I had high expectations from that movie. I am myself a big SRK fan. I don't miss any of his movies. Pathan I had watched twice. I loved that movie. It was an entertaining movie. Jawan was like I was. It's kind of Shah Rukh Khan performing in a South Indian movie. It was like that for me. It was not the Shah Rukh Khan I have been watching over the years. अच्छा, So it was it was a bit let down for me, because there were so many characters, and none of them were well defined. None of them. Nayanthara as a cop doesn't dress up like this or talk like walks like this. लेकिन And मसाला even मूवी, हाँ, लेकिन शालिनी जी, मसाला मूवी में हम जब देखते हैं ना, लाइक द फोकस इज ऑन द सुपरस्टार शाहरुख खान, ये सब कैरेक्टर जो है वो साइडलाइन हो जाते हैं। वो हमने the शायद पठान movie, में भी देखा बहुत। no, I'd like to disagree here, Ravan, because many people SRK fans will say Jawan is an SRK movie, but it's not. It's a team effort. You have Vijay's fan, you have Nayanthara's fan, you have Deepika's fan, you have everyone's fan watching that movie. You know, they may not be SRK's fan, not necessarily. अच्छा, So you have to give yes, you have to give credit to other star cast also who have their own separate fan following. It's not really an SRK's movie just because it's based on him. मुझे बहुत चीजें I couldn't digest, that red pill and blue pill. Oh my God. But that was heights, heights of stupidity and silliness. ऐसा होता नहीं है. It happens in South Indian movies, and me being a North Indian, very honestly, I found it difficult to digest this movie. Sorry, what was that dress? कौन सा ड्रेस के बारे में बोल रहे हैं? वो जो विजय सेतुपति पता नहीं, blue pill and red pill he used to carry. हाँ, अच्छा, that tablets, capsules, right. And he want to control his BP, and right, I remember now. Okay. Exactly. It was so absurd, typical South Indian thing, no offense to anyone, but South में ऐसे मूवी बनती हैं, लोग enjoy करते हैं. Not me at all. I'm not a fan of action at all. I'm more, it's romantic and sensitive type of movie. Okay. So Amit के पास मैं जाऊंगा. Thank you, Shalini. Thank you मैं एक बात बोलना to get the reaction. थैंक गॉड आपने शालिनी को पहले नहीं बुलाया, नहीं तो मेरा सारा टाइम है डिफेंड करने में चला जाता था। तो गुड मैंने पहले बोल दिया। तो मैं आगे बढ़ूंगा अमित के पास। गरिमा, या वी हर्ड फ्रॉम शालिनी। I'll ask अमित कि अमित, जैसे शालिनी ने हमें बोला कि इट्स अ टिपिकल साउथ इंडियन टाइप ऑफ वो सेंसिबिलिटी, इस तरह का फीलिंग पूरा आ रहा था, बट नाउ दैट Atlee and Shahrukh, they have collaborated and they're making a pan-India film. So how much you think that Jawan is a pan-India film rather than being a South Indian, rather than catering to the South Indian market? आपका क्या ख्याल है? First of all, thank you, Jawan, for having me here. But South, it is made on a South Indian platter, catering to a pan-India audience. But problem है कि before watching Jawan, I have watched almost all Atlee movies. अच्छा. उसका जो main theme रहता है वो ऐसा ही रहता है, same. Either it's either a double role. In Mirsal, I was watching Mirsal today again.
It's Okay. Jawan is very similar to Mirsal. वहाँ पे ट्रिपल रोल था, यहाँ पे डबल रोल है. वहाँ पे भी फादर का इशू था, यहाँ पे भी है. वहाँ पे भी एक हॉस्पिटल रिलेटेड इशू था, यहाँ पे वो गन्स रिलेटेड है. It's very similar to what Atlee did previously. Atlee ने खुद का ही मूवी उठा के फिर थोड़ा सा चेंज करके खुद ही बना दिया है. The good thing is that Shah Rukh Khan has been able to make this movie, which is very different from what he usually makes, with a director and a cast and a crew which is very Tamil centric. क्योंकि the music director is Tamil, the director is Tamil, most of the cast are Tamil. He even went to Chennai to a girls' college and said and that this is what he is trying to do now. Maybe because एक तो उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए फ्रॉम 2015 टू 2018. एक भी एक्सपेरिमेंट उसका काम नहीं आया एक्सेप्ट डियर जिंदगी, where it was still a decent movie in both in terms of box office and both in terms of the how the movie was made. But अभी उसके बाद with Zero, Fan, with metal, not working anything, तो उसने what he has done is what most of the actors try to do कि let me go back and make an action movie, क्योंकि अभी action movie चल रही है. If you look at Pushpa, if you look at KGF, if you look at RRR, if you look from Bahubali, action movie चली है with a bit of let's say a drama, some bit of romance, थोड़ा social issues उसको लेके यही चल रहा है. So he has just सेट कि ठीक है जो चल रहा है उसको ही मैं चलाऊंगा because ultimately he is a better businessman than an actor. Thank you so much, Amit. I'll go to Siddharth right now. So, Siddharth, do you think that Shah Rukh Khan has actually got the formula for how to make a hit, right? And he should continue because एक जगह पे मैंने पढ़ा सिद्धार्थ कि Shah Rukh Khan has told कि he always wanted to do an action film and he wanted to be an action hero, but उसको वो मौका ठीक तरह से नहीं मिला. Now that he has got Pathan and now that he has got Jawan and they're getting great figures, registering great figures in the box office. So do you think that he will continue doing this and he will click every time? What do you feel? I don't think so. He will not stick to the action genre. The only reason being, come on, SRK is a brand today, right? वो एक सनग्लासेस पहन के पीछे मूड भी लेगा और उसपे कोई बैकग्राउंड म्यूजिक चला दो, that becomes a romantic movie. Right. And if he'll just walk off even from a Scorpio and then you have your whole cinematography from the shoes to the hair, it becomes an action movie. So I don't think he's fit for a role or fit for a genre. You have to determine whether what he's doing, the genre has to acclimatize it with his walk or with his moves and everything. See, one thing you have to give it to him, Awan, and I had seen this before even I saw the movie. See, the public waking up at 4 o'clock, they don't wake up for anything except flight. Public waking up at 4 o'clock, going to their nearest theaters at 5 o'clock, 5:30, fighting for the tickets and so on. Till, celebrations with cake and whatnot, real cutout figure, then watching the movie, dancing, coming out and dancing. See, that movie is not just giving you 2.5 hours of entertainment, it's giving you full days of entertainment. I don't think Shah Rukh will stick to action. He has done Dear Zindagi, right? As a kind of a swing. Correct. And he had done it well. It was ahead of time. We can't blame it. But he has done it well. I don't think he's sticking to the action genre. And if you're asking whether he's back, he was always there. It is just that the tiger was reserving his energy for the big leap. Yeah, fantastic. Yeah, thank you, Siddharth, for that. So, coming back to Jawan, I'll have some other type of question, matlab, not related to the aura of SRK or how the film will perform or how the film has been performing and all those things. But I will ask each one of you, and we have new people also, Hidayat and Bridge, joining us. So सबसे पहले मैं पूछूंगा कि शाहरुख खान इसने जवान में काफी सारे लुक्स
अपनाए हैं, right? He has got multiple looks in the film. तो गरिमा, सबसे पहला which look did you like the most? Oh, I love Vikram Rathore, जो ओल्डी शाहरुख है और जो जिस तरह से उनका swag है, उनका एंट्री जब होता है ना वो when you belt say Vikram Rathod ना, उसके भी 3 looks है. When he was in his youth, and then he comes back as this thing, right? जब वो आते हैं शाहरुख खान को मतलब यंगर शाहरुख को बचाने के लिए आते हैं, that then he has another look. Okay. टू लुक है ना, एक तो वो जो स्टार्टिंग का होता है एंड देन वो जब आते हैं यंगर शाहरुख को बचाने के लिए विद द बेल्ट एंड ऑल. सो एक्चुअली आई लाइक बोथ द लुक, बट डेफिनेटली द लेटर पार्ट जब वो शाहरुख को बचाने आते हैं एंड देन देयर इज अ सीन वो बेल्ट उतार के यू नो से घुमा के मारते हैं. एंड ऑल्सो द बाइक वन, जब वो बाइक में ना बहुत स्टाइल से सिगरेट जला के जब वो फेंकते हैं, I loved it. मतलब मैंने इतना चिल्लाया उस चीज and I really want to watch this one more time. Definitely this week or next week मैं दोबारा देखने के लिए जाऊंगी. तो I love that oldie शाहरुख look. और जो लोग ऐसे बोलते हैं ना कि शाहरुख तो अब बुढ़े हो गए हैं, अब तो 59, उनको देखना चाहिए कि शाहरुख बुढ़े होके भी काफी handsome लग रहे हैं. So yes, that look. What about Shalini? Shalini has slammed the movie, but I'm sure that आपको कुछ तो looks पसंद आया होगा. No, I love Shahrukh Khan. I always say I love him, but I love for him, like for his romantic roles, you know, he doesn't, action doesn't suit Shahrukh at all. He's not for action movies. He has, you know, as a charm, you know, he's a very charismatic personality. So he's more like a lady man. And I just want to have the image of Shahrukh in my mind forever, you know. So I don't want this. कौन सा look पसंद आया आपको? मुझे I like the older one. बेकरार करके हमें यूं. Okay. Yeah. What about Amit? I also loved the older Shahrukh look, which Garima said, but that look is heavily inspired from Mirsal. Where Vijay Thalapathy also has a very similar kind of look. Only the difference is that he comes in a South Indian traditional clothes, in a dhoti and a shirt. But yes, that wild beard, that rough hair, everything is very inspired. But yes, Shahrukh could carry it. Very few actors can carry it. Okay. Everyone. Which was your favorite look of Shahrukh from the Actually, film? Yeah, let me clarify. I've not seen the movie yet. But you would have seen you would have seen even enough of the promos, the trailers, and all those things, right? We are not discussing the spoilers, right? No, we are not discussing the spoilers, right? No. We are not spoiling. We are not sending any spoilers. We're just asking. Yeah, the look I like is the bald look. Sorry? The bald look with the bald look, okay. Bald look. Okay, in the metro. Okay. Hi, Hidayat. Hi, Hidayat. How are you doing? Hi, Jawan. Nice to finally, join one of these sessions. Actually मेरा अभी ऑफिस चल रहा है in between, Okay. So, लेकिन अभी कुछ नहीं है in between. Big Shahrukh Khan fan. Thanks for pulling out some time for this. नहीं, अगर मैं बीच में चला जाऊंगा तो sorry for that already. अच्छा, लोग की जहाँ तक बात हो रही है तो I always liked शाहरुख with beard, right? चाहे वो कबीर खान था, चाहे even in Dawn जब वो जेल से निकलता है तो वाला जो beard look है, और इसमें of course विक्रम राठौर का जो swag है वो पीते हुए, so that's going to stay, and I think beard suits him. Okay. Okay. So personally मुझे लेकिन वो वाला look बहुत अच्छा लगा जिसमें where he wears a full black and there is a mask covering half of his face. I think that is also inspired from I think Vijay का जो विक्रम का जो look था, विक्रम चियन का जो look था, अपरिचित, हाँ, उससे भी थोड़ा सा inspired है वो look. But that looks really amazing. मुझे बहुत पसंद आया. अच्छा, अभी फिल्म के बारे में एक चीज मुझे बात करना है आपसे कि इस फिल्म में जो हमने डायलॉग बहुत ही ज्यादा वायरल हुआ है एंड इट्स बिकम वेरी कैची लाइन कि बेटे से बात करने से पहले बाप से बात कर. ओके, डू यू थिंक दैट इट इज अ काइंड ऑफ रेस्पॉन्स टू ऑफ शाहरुख टू एनी ऑफ द इन्फ्लुएंशियल फिगर जो कि उसको स्लैम करने की कोशिश किए थे, उसका लाइक शाहरुख सन वाज अरेस्टेड, आर्यन अरेस्टेड, वाज इट रिस्पॉन्स टू दैट? उसका कुछ डीपर मीनिंग है क्या? और इज इट लाइक विद जवान, डू यू थिंक इट इज अ पर्सनल बैटल दैट शाहरुख खान हैज वन? व्हाट डू यू फील, Hidayat, about that?
So I think there are two things, right? पहले मुझे लगा था कि वो समीर वानखेड़े के लिए, but हाँ when I looked at the picture in the whole, right? तो it has a far reaching message मेरे हिसाब से, ऐसा मुझे लगता है. And it was, we have always even अभी उसका ट्वीट आया है जो अगेन कॉन्ट्राडिक्टिंग है जो मूवी में है, you know. तो there are few things which are political in nature, लेकिन उसकी जो खामोशी थी इतने दिन तक, I think it was building up and he was just waiting for the right time. जैसे बोलते हैं ना, सचिन जब खेलता था तो he used to respond by his centuries, he used yeah to respond by his his work, bat right? used to react yeah That exactly. तो मुझे वही लगा कि कंट्रोवर्सी हुई एंड ही वाज अंडर, किसी का बेटा होगा तो ऑफ कोर्स, तो ही वेटेड एंड दैट्स जो ग्रेस के साथ उसने वेट किया, एंड आई रियली थिंक इट्स नॉट कोइंसिडेंटल नहीं है, इट इज वेल थॉट, और वो हाईलाइट में भी था, परव्यू में भी था, तो दैट्स आई थिंक. so Absolutely. yeah. So Shalini, tell me one thing, like Jawan is being liked by almost everyone, but बहुत लोग पसंद कर रहे हैं. Of course, we have detractors who have not liked it as much as they do. लेकिन but is Shah Rukh Khan the only reason of of the stupendous success of Jawan so far? या इसमें जो मैसेजिंग दिया है कि अपने आप को, मतलब हमें एज एन इंडिविजुअल, एज ए सिटीजन, सोसाइटी को कैसे सुधारना चाहिए, इट हैज अ मैसेज, राइट? इज दैट आल्सो क्लिकिंग विद द ऑडियंस, और शाहरुख इज द ओनली रीजन फॉर द फिल्म सक्सेस? आपको क्या लगता है? No, definitely the second half, the messages that had been sent through the movie that works with the masses. The Aam Aadmi definitely relate to it. Achha. Because we have actually seen all this happening in our society. And get someone to come on the big screen and send this message. It was very important and very thought. I really appreciate, especially that voting thing. The power of finger, right? That was a message. That was a very important message, and I think that worked with the audience too. Apart from SRK and his charm, this message and these social issues that were put forth, totally they were responsible for the success. I believe so. Because those parts touched me, regarding that farmer, when the farmer hanged himself and the daughter came after the time, and I was literally in tears that time, it was that hurting, it was that emotional scene, it was that. So I could connect, but on when these actions and started and everything, I said, where the movie is going now, where is it is heading? Starting to itna acha hai, what happened later on, वो thing that मुझे अजीब लगी. एक फ्लो में चलते तो एक अच्छा लगता. Right. It would have been a good movie for for India, for an example, for politicians, bureaucrats, everyone. That way. Otherwise, okay, सबको तो पसंद आती है. अपने choices हैं, right? Garima, what do you feel? कौन सा क्वेश्चन, फर्स्ट की सेकंड? नहीं, my same question to that I asked to Shalini, like फिल्म का सोशल मैसेजिंग जो है, is that also the main reason of Jawan being liked by so many people and being super successful? आई थिंक डेफिनेटली, क्योंकि बहुत देखो, हमने शाहरुख को ऐसे बहुत कम ऐसे मैसेज देते हुए मूवी में बहुत कम देखा है, वो भी इतने इस तरीके से. मतलब जैसे अगर डियर जिंदगी भी हमने देखा था तो काफी वो सीरियस मूवी थी एंड उसका एक अलग ऑडियंस था, बट ऐसे मास ऑडियंस के लिए इस तरह का मैसेज तो वो तो डेफिनेटली वर्क किया है, जैसे शालिनी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया. एंड डेफिनेटली मुझे लगता है ये साल शाहरुख का चार्म का ही साल है, तो वो तो डेफिनेटली मतलब एक रीजन है कि शाहरुख को पीपल आर लविंग हिम. एंड जिस तरह से आज मैं एक वीडियो देख रही थी कि मन्नत के सामने किस तरह से लोग जाके और वेटिंग फॉर हिम टू कम एंड जस्ट वेव, तो वो एकदम से एक लहर जैसे चल गई है शाहरुख खान के पीछे कि सबको अभी शाहरुख सब लोगों का फेवरेट शाहरुख खान हो गया है, तो वो भी चल रहा है. तो मुझे लगता है दोनों रीजन इक्वली इस मूवी के सक्सेस में कंट्रीब्यूट करते हैं. वाओ, राइट. अमित, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा. लाइक आई सॉ वन फोटो गोइंग वायरल दैट विक्रम राठौड़, राइट, जो बनाए शाहरुख खान, विक्रम राठौड़ कैन ईट 10 रॉकी भाईस इन हिज ब्रेकफास्ट and 20 in his lunch. Okay.
So, okay. Because Amit, you watch a lot of South Indian films also, and आपने actually कभी सारे film देखा, तो do you feel that this kind of comparison is justified going with the current, This sensationalism that Vikram Rathod has created? this is just something which is created by fans. Uh, Let's not compare him with both KGF Yash, who is relatively young and still finding his feet, hmm. and the other one, who was it? One Pushpa, was Rocky Bhai. Rocky Oh Bhai, and yes, so yes, Al, Allu Arjun. but Yeah. now Allu Arjun fans will come and say, see, Pushpa has won a national award, so we can't compare. So yes, it's no use of comparing Shah Rukh Khan, who has been in the industry for more than 30 years, so with one who is relatively new and one who is only catering to the south. Right. So we don't have much time now. We have 3.5 minutes from now. But I also have a question in mind, which I also want to know from you. Like, apart from the social messaging and of course Shah Rukh Khan, उसमें मैंने कुछ और reasons भी देखा, मतलब और भी parameters मैंने देखा कि might have contributed to Jawan's success. One being there was more screen count than other films. There were the ticket rates were elevated, escalated like anything. I think Shalini, your ticket rate was around 1,000 rupees, right? So that to be in Bhubaneswar, and also there was no competition during this time. So do you think these factors also contribute to the phenomenal collections of Jawan? and Anyone? and there and it was Janmashtami, so there was an Yeah, हाँ, extended उससे weekend. और एक point आया था कि Jawan was first initially slated for 2nd June release, and then they postponed to 7th September to overlap with Janmashtami. So जो character भी है Azad, like he has a lot Yes, of parallel with I Lord Krishna, right? Krishna. So, Yes, yes. uh, I so was reading was somewhere it that there are intentional? four Was it points. intentional? So there are 4 points where not Vikram Rathod, the boy Azad, son of Vikram Rathod, Azad, can be compared to Lord Krishna. 4 reasons. One is he was born in a jail. Two is he was raised by raised by not a his birth mother. surrogate mother. Third is he wanted to change the society. And fourth, he has an army of women. So Hmm. these 4 points make him very similar to Lord Krishna. But Yeah. yes, but yes, people were expecting Jawan, so the marketing and publicity of Jawan has been good, Hmm. and also there was no competition. People have only watched Gadar 2 before that, so Gadar 2's runtime was mostly over, Yeah. and when Jawan came, there was nothing even in South that was going on. Even Jailer had come on 7th itself. Jailer had come to the OTT platform, so Right. Jailer was also not running in cinemas in Tamil. Right. So it had a plenty of free space to do what, and also ticket prices were very high. Hmm. I had even tried to book a ticket which was 1900 in Kolkata. Oh my God. Oh my. So yes, so it and still it I could not get it for my parents. So they will have to see next week. So yes, it is combination of all factors: good marketing, decent story, action genre which is going on. So that's all that is making him. So we have 1 minute more. I would like to know the rating, final rating from each one of you for Jawan. Amit, to start with you. I think we go with 3.5 out of 5. Okay, 3.5 from my side also. I have already reviewed the film. Shalini, 3. 3 out of 5. Garima. I would go with 3.5. Typical Huh? masala movie. I was thinking 4 or 4.5 But from मैं you. पूरा Exactly. movie अब चार को तो I can give 5 on 5, but मैं पूरा overall movie अगर देखूँ तो 3.5. What about Hidayat? I'll give it 4. Oh, amazing.